Papers to be laid on the table. Mani Dr. Jitendra Singh. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1, serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Deputy Chairman, sir. Mani Sri Arjun Ram Meghwal. Mani Sri Ashwini Kumar Chaube. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। माननीय श्री वी मुरलीधरन। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Professor S.P. Singh Baghel ji, I rise. उन्होंने चिट्ठी दिया पहले दिया होगा ना। Again, Mr. माननीय वी मुरलीधरन जी, आपका 2 बार नाम। With your permission, respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 22 in today's revised list of business. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। माननीय श्री वी मुरलीधरन जी। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 25 in today's revised list of business. Again, माननीय श्री वी मुरलीधरन जी। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Rameshwar Teli ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 27 in today's revised list of business. Dr. Munja Para Mahendra Bhai. 28 we have. With your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 9 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. L. Murugan. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2, class 10 of today's revised list of business. Sri Nisit Pramanik. Mani Sri Nisit Pramanik. Mani Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Nishit Pramanik ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 211 in today's revised list of business. Now we move to reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. Dr. Abhishek Manu Singhve, not present. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy. Sir, I wish to present a copy, each in English and Hindi, of the following reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. 186th report on action taken by government on the recommendations, observations of the committee contained in its 181st report on development of trade and industries in Northeastern region, and 187th report on comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports. Thank you, sir. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family. Mani Sri Bhuneswar Kalita. Sir, I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. Number 1, the 152nd report on the action taken by the government on the recommendation observation contained in the 144th report of the demands for grants 23-24, demand number 47 of the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare. Number 2, the 153rd report of action taken by the government on the recommendation of observations contained in the 145th
145th report on demands for grants of 2023-24, demand number 4 of the Ministry of Ayush. Number 3, 154th report on action taken by the government on the recommendation of observations contained in the 143rd report on the demands for grants for 2023-24, demand number 46 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, and number 4, 155th report on the functioning of the central government health scheme. Thank you, sir. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I raise to present following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, Culture. 364th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 343rd report on demands for grants 2023-24 of Minister of Tourism. 365th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 350th report on the subject development of greenfield and brownfield airports and issue pertaining to civil enclave in defense airports. 366th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 353rd report on the subject issue of fixing of airfares. 367th report on the subject operations and maintenance of national highways and management of toll plaza. 368th report on the subject status of shipbuilding, ship repair and shipbreaking industries in the country. And 369th report on the action taken by the government on its recommendations, observations of the committee contained 352nd report on the subject functioning of major ports in the country. Thank you, sir. Thank you. Now, reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. Manishri Vijaypal Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने अंकित क्रम संख्या 6 पर विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2023-24 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सवाल पर रख रहा हूं। नंबर 1, औसत विभाग रसायन उर्वरक मंत्रालय से संबंधित चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन संबंधी 50वां प्रतिवेदन। नंबर 2, रसायन पेट्रोकेमिकल विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समीक्षाओं सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन। और नंबर 3, उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित उर्वरकों पर जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरक उत्पादन और आयात नीति आयोजन के संबंध में विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समीक्षाओं सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन। Thank you. Now, report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence. Marni Lieutenant General Retired Dr. D.P. Batsi. Dr. D.P. Bats. Sabhapati ji, I rise to lay a copy of the 47th report pertaining to the review of functioning of Jila Sainik boards in country, both Hindi and English version, of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Thank you. Now, report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on House and Urban Affairs, Manishri Ramchandra Jangda. Manishri Ramchandra Jangda ji.
महोदय मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध स्मार्ट सिटी मिशन एक मूल्यांकन विषय पर विभागों से संबंध संसदीय आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण 17वीं लोकसभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सर। Now reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology. माननीय श्री लहर सिंह सिरोया। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 54वां, 55वां, 56वां और 57वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। Now reports of the Public Accounts Committee. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल, माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। Sir, with your permission, I rise to lay the Hindi and English version of the report number from 104 to 123rd. Total number of 20 reports of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in the today's list of business. धन्यवाद। Now report of the department related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj. माननीय श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज। माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव, माननीय श्री सकलदीप राजभर, आप रिपोर्ट लेकर। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन विभिन्न विभागों और संगठनों और संस्थानों में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 30वां प्रतिवेदन, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 31वां प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 32वां प्रतिवेदन और गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। नाउ रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। माननीय श्री मिथिलेश कुमार, माननीय श्री मिथिलेश कुमार। माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथासूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्थायी समिति का 24वां हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। नाउ रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। डॉक्टर अनिल जैन। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14(1) पर मेरे नाम के सम्मुख यथासूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। मान्यवर, मैं 23वें प्रतिवेदन की भी एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। नाउ स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Sir, with your kind permission, I rise today on the table of the House a statement regarding A, the status of implementation of the recommendations contained in the 325th
report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. B, the status of implementation of the recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change pertaining to the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. C, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. D, the status of implementation of the recommendations contained in the 351st report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests, Climate Change and on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. And E, the status of implementation of the recommendations contained in the 358th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change on demands for grants 2023 of the Department of Atomic Energy. Thank you, Deputy Chairman, sir. धन्यवाद. For Sri Arjun Ram Meghwal ji, माननीय श्री V मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the statements showing action taken report on the recommendations contained in the 356th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants for 2023-24 of Ministry of Culture. Thank you. Again, माननीय श्री V मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhatt, I rise to lay the statements regarding a 331st report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, contained in its 320th report on development of tourism infrastructure in the country. B, status of implementation of the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, contained in its 338th report on the demands for grants 22-23 of the Ministry of Tourism. धन्यवाद. Dr. L. Murugan. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation contained in the 38th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on ethical standards in media coverage pertaining the Department of Information and Broadcasting. Thank you. Now, motion for election to the Central Advisory Committee. माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी to move a motion for